1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony, until one day a young man catches fire. This is Phoenix. Like a phoenix, you burst into
Um, okay. Hi everyone, and welcome to TiltShift 2022, brought to you by Color Bucket and Resume. My name is Karthik, and I'm your host for this evening. Our last event of the day is Cometty, our stand-up slash improvisational comedy event. And yeah, I hope you guys are excited. So this year, we have decided to put our participants' comedic skills to the test from all around. Not only will they perform their prepared sets, you're also going to see how funny they are at gunpoint. Our event is divided into two parts. So, first, our participants will perform a stand up set. And after all the performances are done, we will play two improv games that will be revealed in due time. So, before we begin, now it's time to welcome our judge for this event. Please put your hands together virtually for Vanshika Arora. Hi guys. Hi, ma'am. It's lovely Thank you for meeting you joining us. all. Thank Great, you. yeah. It's great that you Yes. guys have taken such an initiative. I find this very interesting. I hope that I will also find the participants interesting. They should also hope that I find them interesting. So, yeah. Yeah, I guess only time will tell. So, uh, let me tell you something about our judge. She started doing comedy a year ago, and she runs a women-centric collective called Bullshit Comedy Club on Zoom as well as live in Delhi. She has performed at venues such as Happy High and West Side Comedy Club. She has been part of the Couch Comedy Show, Comics Light, Jokes Tight, Comedy Home Delivered, and various open mics. And she's quite famous for her strong Twitter game. Mhm. Hi, ma'am. Welcome to TiltShift 2022. Thank you so much. I love the fact that you have literally stalked me so well on Instagram. He has genuinely put in every aspect of my, what do you call it, unorganized Instagram in point. इतना मुझे भी नहीं पता मेरे बारे में. My celeb team is very strong. Great. So, Thank you okay. so much for having me again. Yeah. Yeah, I'm excited. So, before we begin, let me just go over the rules and regulations once. Uh, Duration of each set for the first round should be 4 to 6 minutes. In case the comic loses connections during the set, the timer won't be stopped. They'll be given 30 seconds before the set to ensure that their network is stable. Uh, Participants will have to keep their camera on during the sets. The event is independent of the theme. The set can be written on any topic as long as it conforms with the college decency guidelines and isn't obscene, profane, or vulgar. No language barrier for the sets. Sets can be formed in Hindi, English, or Marathi. The final decision in case of any dispute will be made by the organizers and the judges. Before we kickstart this event with our first participant, here are our sponsors. Our title sponsors are Color Bucket and Resume, our co-sponsor Art Venue, digital media partner Atput News, eyewear partner MacV, beauty partner Blur India, and merchandise partner Tees. Uh, yeah, so okay, we are done with all the formalities, and it is about time we begin with the event. So yeah, let's see who makes us laugh the most. Here's our first participant. Can we have Akshay Anand from Team Astrid? Yes, I'm here. Tech team, can we pin him?
Do I start now or? Hold on. Yeah, Oh yeah, I think I'm pinned now, right? Right. Yes. you can start. All the Sure, best. I'll go ahead. Hello everyone. Great to be here. Not my choice. I was forced to do this by my college contingent leader. I thought peer pressure in college was supposed to be about being forced to do drugs and alcohol, not being forced to join a Zoom call. I really wish it was about being forced to do drugs and alcohol. I kind of miss that. But I also wish I knew what my college classmates look like. But I've seen their photos online. Not really hot on that, so I'll pass. It's my first time doing stand up. And what a crowd we have here. We have blank screen number one, blank screen number two, and we have the head of the event. So, wow, that's a great crowd. Thank you so much for showing up so that I can see all your faces. Thank you. And this isn't the first time I've gone in front of a crowd and made people laugh, but it should be the first time I'm doing it on purpose. I think that's an important distinction to make. Yeah, but I never wanted to be a comedian, right? I never did. My biggest dream has always been to be a writer, a successful writer. You can laugh now. That was the joke. A successful writer. I've never heard of one. My friends in school thought that was a great joke too. One of them made this joke where he said that there were only three streams in high school. That's science, commerce, and unemployment. that got a lot of laughs. Yeah, funny guy, very funny guy. Then he had to take a gap year after school because he didn't get into the college that he wanted. That was also pretty funny. I almost laughed at his funeral. Okay, he didn't kill himself. I'm just kidding. He's there inside. But which one of us isn't at this point? It's the pandemic. I'm telling you, it doesn't end. It never does. Apparently, Israel's considering giving a fourth booster shot to their elderly citizens. Like, dude, 4 shots? Israel's that rich kid at a club who can drink all the shots they want, but really shouldn't. And then they turn around and say, why isn't anyone having a great time? Because you took all the shots, damn it. It's so weird. They're drowning in booster shots, shooting themselves up like it's heroin. And then there's some people who think that the vaccine has microchips in them. It's the usual suspects, Bill Gates and the Rothschilds want to track you. Because we all know that the best way to control the population is by forcing them to take a very widely marketed and disputed product. That's a great plan. It's a great plan. You know what else is a great plan? Tracking our phones. Uh-huh. Oh, wait, that already happens. Huh. Let's try something else then. Maybe they want to put microphones in our houses to hear everything we say. How do they do that though? Alexa, do you know how that's possible? Alexa doesn't know how that's possible. And I trust it. I trust my smart speaker. It has access to everything I say and everything I want. It's a brilliant device. Do you understand how creepy these things are? You're worried about the wrong things tracking you, people. I'm not a conspiracy theorist, but just look around. You allow a smart microphone inside your bedroom, but won't take a vaccine? At least the microchips are inside you and don't know what you're doing. That's what she said. I'm sorry, I had to make that joke. Comes from watching too much of The Office, just like everyone else right now. And the streaming platforms, they've struck gold. They've struck gold. I wouldn't be shocked if they're the ones who keep introducing the new variants into the world. There's proof too. Netflix has already unleashed terrible viruses onto the world. One of them is called Emily in Paris. Ugh, that show's terrible. Nobody wants to watch an American in a different country. They usually just there to steal oil or set up a democratic government. It's just not that fun to watch. Squid Game took over the world too, and well, it's nice. It's okay. I watched it. It's decent. But if I want to watch a bunch of people compete to the death in an innocent game, I just watched Novak Djokovic host a tennis tournament for the unvaccinated. Easy shot, I know, but it's not my fault that none of them took it, right? The world has really gone kaput, guys. It has. It's gone kaput. It's gone mad. You can now buy things, but not own them. They're called NFTs, non fungible tokens, or as I like to call them, a new financial trick. It looks like a pyramid scheme, sounds like a pyramid scheme, and it's bought and sold by teenagers and internet users. That's a very reassuring combination of players in the market, right? Yeah, it is. It sounds great, not totally legit. I stay in a boys' hostel, which means I'm surrounded by a bunch of dudes all into hustling and grinding and being productive. Their favorite movies are American Psycho and The Wolf of Wall Street. Nice, very nice. All they talk about is crypto and trading and NFTs. I'm so sick and tired of hearing about it. I don't care. I don't care about it. I'm an artist. I'm a writer. I'm a creative. All right. That's why I don't like it. Not because I'm not good at trading or because I don't understand it, or because I'm jealous of them, or because they make so much more money than me. No, 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 no. No, I'm a supportive guy, right? And I support the real world, not this fake stuff, not the metaverse.
where you can get catfished by someone whose avatar is literally a catfish. Yeah, that's possible now, people. Do you see the irony in this? Not a lot of people do. Are we in the metaverse right now? I think we are, because I haven't seen any of you in real life. And some of you could look way better than you should. I mean, I'm just gonna be honest about that. If this is the metaverse, it sucks. Because I'm stuck looking like myself when I want to look like Buppy Larry. If I can't look like Buppy Larry online, what's the point of all this? Huh? Nothing. Absolutely nothing. And if on that note, I hope you can give me some fake canned applause. Let me feel like my stand-up set was funny as at least an episode of Friends, right? I'm sure you all watched that. Thank you so much. That's all I have time for today. I hope you don't cut me off. Thank you for not cutting me off. Yes. Bye-bye. Thank you, Akshay. You woke up and chose violence. Or kya bolu? Yeah. So next performance, we have Soumitra Lovalekar. Sorry if I'm pronouncing your name. Hi, I had just have a question because Yeah. you guys are not answering me on WhatsApp, so I have to ask you here. We are sorry. What What's are the the question? total marks? Like out of how many marks do I have? It's just So out of 10, so oh, I'm Joshua. So there'll be two rounds. The second round also is out of 10. The first round is also out of 10. cool, So cool, a cool. total will be. Get it. Thanks. And also another thing, if you have so many sponsors, you could have paid me also. Just saying. So many sponsors. If I knew you would have so many sponsors. Just kidding. Team marketing and team celeb, please. Let's not make this more awkward. Karthik is like, मेरी Yeah. गलती नहीं है यार. मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ होस्ट कर रहा है. मेरे को नहीं पता ये लोग कौन है. Guys, चलो. Let's continue the show. It was great. Let's have this performance. Yeah. Up next, we have Soumitra Lovalekar from Team Astrid. Hi, this is a regular mic test. Am I audible? Yeah. I'm Pen, right? Okay. Hey guys, firstly, it is a pleasure to be able to try and make you all laugh here today. Clearly, neither of you have anything better to do than to watch someone like me embarrass themselves. I'm not complaining. I'm the one who actually participated, right? Anyway, I'll cut to the chase. The terms mommy issues and daddy issues bug me a lot. Yeah. Now, when I say those words out loud, most of us are either weirded out or questionably aroused. Yeah. I see your faces. I see your faces. Come on. I'm judging neither. What really annoys me is the thought gone into coining those terms. Let's say I point to a dude and say, that guy has serious mommy issues. 8 and 10 times, the person I'm talking with will chuckle out of amusement before realizing it's a genuinely serious case. Like, and same goes for the other term. I'll point at Joshua and go, that guy has serious daddy issues. And I mean, everyone's looking at him like, yo, this has got to be a kinky stuff thing, right? I mean, come on. I see your smile. Come on. Okay. The thing is, no one takes you seriously. The thing is, I can't take myself seriously. And I'm bound to mock the poor guy for the situation, you know? Next thing I know, I'm shitting on Batman for having mommy issues. I mean, see, the corruption in Gotham was part of it, but we all know, Batman's main drive was unresolved parental issues. Years of not talking about his trauma made him an emo billionaire. I say the real crime in Gotham was the lack of therapy. But this these terms are just an umbrella for several different problems, right? Like, uh, Karthik, you've got so low self-esteem. Maybe you've got daddy issues. Um, who else is here? With all due respect, Vanshika ma'am, if you have abandonment issues, it might just trace back to mommy issues, you know? Just spitballing you. Whoever rounded up these serious mental health problems and shitty parenting as mommy issues deserve a raise. I mean, come on, just a round of applause, right? Like, okay, I'll give you another example. Superman, the man of steel, you know, we've all heard him, we've all grown up with him, the overpowered Kryptonian god, right? His parents straight up chucked him onto another planet at birth. I mean, I just talked about abandonment issues, right, Vanshika? Like, yeah, you get it. The number of times an Uncle Ben has been killed to motivate a Peter Parker still
baffles me. Like, with great daddy issues come great storytelling, apparently. I mean, imagine being Uncle Ben and waking up to your nerd nephew growing rock hard abs and biceps out of the blue. That is the universe telling you you are about to be written off for someone else's character development. I mean, you're being written off, my come on. Okay, son, may goodbye. Come on. The thing is, it doesn't end there. Come to think of it, why is the kid with the issues labeled in the first place? You never hear your parents being called out for daughter issues or son issues. I get that it doesn't have the same ring to it, but why pin it on the poor child? I mean, come on. I want to take this seriously, right? I want to take this whole conversation seriously, but part of me just wants to keep saying daddy issues in a really sensual way over and over again until Karthik finally mutes me. I think I've said daddy enough times to completely embarrass myself and make the rest of y'all noticeably awkward. This has been a questionable 4 minutes time. I hope I never run into either of you. Either of you. Thank you so much for bearing with me. Cheers. Yeah, that was so much. Thank you. Thank you for performing. Thank you for And mentioning me and like so many times. It was like, okay, thanks. also, thank you for personally attacking us एक एक करके Yeah. अलग-अलग से. You know, Next, can I just say something? You don't mind, right? yeah, sure. So the thing is, he just mentioned like daddy issues. I just have one question. Who, when, and where just thought that daddy should be a sexual word? Like, what was the date, time, venue that this became a sexual word? I will never get it. Stranger things have happened, so I think. Yeah. That was great. Let's keep the mic rolling. Yeah. For the next set, we have Priya Prabhu from Team Serapis. Yes. Am I clearly audible and visible? Yeah, Can I start? yeah, all the best. Okay, thank you. तो इससे पहले कि मैं जोक भूल जाऊं मैं फटाफट से बोल देती हूँ कि इस पूरे स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट की सबसे आयरॉनिक बात तो यही है कि हम बैठे बैठे जोक्स मार रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो कॉमेडी, लेकिन मेरा नाम, हाँ प्रभु मेरा सरनेम है ना। वैसे आपने मेरे नाम से तो ये अज्यूम कर ही लिया होगा कि मैं साउथ इंडियन हूँ। सो प्रीजुडिसेस को साइड रखते हुए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, मुझे देख के कोई विश्वास ही नहीं करता। मतलब एक बार मैं केरला गई थी एक अम्यूजमेंट पार्क में, तो वहां पे वो जो नीला टिकट काउंटर नहीं होता जिसमें पान के स्टेन्स होते हैं, वहां पे मुझसे किसी ने पूछ लिया विच कंट्री, तो मैंने भी मजाक मजाक में बोल दिया यूएस। फिर वो कहता है ठीक है निकालो फिर 2000 रुपए। मैंने कहा भैया क्या बात कर रहे हो, मैं तो अगले शहर ही रहती हूँ। फिर पता चला उसको इतना समझाया उसको समझ नहीं आ रहा। फिर पता चला कि उसे तो हिंदी ही समझ नहीं आती, इंग्लिश में समझाया फिर समझ नहीं आया। फिर तो क्या था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिपोर्ट कार्ड और बकायदा दिल पे हाथ रख के जब तक उसको मैंने जनगण मन की 2 पैराज ना बोले ना, उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। खैर ये तो वैसे 6 साल पुरानी बात है, बट इसका रीजन आज तक वैलिड है। ये मेरे बाल, मतलब मैगी को भी कर्ल करके जो एलिमेंट बनता है ना, उसकी कोई कॉम्पोजिशन हो रखी है। ट्रेसेमे वाले खुद परेशान है मेरे बाल से, कहते हैं कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ जो आपके बाल ठीक कर सके। इसलिए ना मैं आजकल शार्क टैंक इंडिया देखती हूँ, इसी उम्मीद में कि कोई तो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आएगा जो शायद मेरी दुनिया बदल दे। बट ऑल आई एम हियरिंग नाउडेज इज दैट इस फील्ड में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। मैं कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी बोल देती हूँ कि ये तो तुम लोगों का दोगलापन है। Actually, this is the reason my most hated places to visit is the salon, because वहां पे हेयर ड्रेसर यानी मम्मा का कनेक्ट मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि मम्मा अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पे बात कर रही हैं और बच्चों की खतरनाक वाली बेइज्जती हो रही है। मतलब एवरी टाइम आई विजिट अ सैलून ये स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिलता है कि बेटा आपके बाल बहुत ड्राई हैं। मैंने कौन सा पैंटीन में ऐड करना है, पर बात यहाँ तक थमती नहीं है ना। उसके बाद जो मम्मी का डायलॉग आता है कि हाँ ड्राई तो होंगी, मेंटेन थोड़ी ना करती है। तो मैं मम्मी को देख के बोलती हूँ कि आप मुझे 18 साल और 9 महीने मैंने कैलकुलेट किया है से जानते हो, और इन्हें 2 मिनट से, तो ये कौन सा कनेक्ट है मुझे तो समझ नहीं आता। वैसे यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि सारे जोक्स मुझ पे ही हैं, अब उसके भी 2 कारण हैं। जब आपकी खुद की जिंदगी इतनी मीम कंटेंट टाइप्स हो ना, तो दूसरों पे मजाक उड़ाने में मजा तो आता नहीं है। और मैं ना थोड़ी नार्सिसिस्ट टाइप्स हूँ। नहीं गीत फ्रॉम जब वी मेट वाली नहीं, उसका तो प्रोडक्टिव था। मेरा तो ऐसा सीन है कि गैलरी में भी जो फेवरेट्स वाला ऑप्शन होता है ना, उसमें भी दूसरों की फोटोज हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं।
वैसे मैं ना फूडी भी बड़ी हूँ, मतलब मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ कि मुझे मोमोज के सपने आते हैं। और रात को तो बाय गॉड जब सब सो जाते हैं ना, तो जो शेफ वाली फील्स आती है, ओह, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मास्टर शेफ तो मैंने क्रैक करना है। और जो एटॉमिक लेवल की आवाजें होती है ना, वो भी रात को ही होती है। जैसे मैगी बनते हुए बिल्कुल बबल्स बर्स्ट होने की आवाजें आ रही हैं, और पॉपकॉर्न बना लिया तो क्या ही कहने, ऐसा लगता है कि बिल्कुल गोलियां ही चल जानी है। बिकॉज एट द सेम टाइम एक निंजा का रोल प्ले भी तो कर रही होती हूँ। ऐसा लगता है कि अपने ही घर में चोरी कर रही हूँ। एंड मुझे ना ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि इंडियन पेरेंट्स के माइंडसेट में कि नाइट आउल का कॉन्सेप्ट फिट क्यों नहीं होता। मतलब रात को नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, और सुबह इतनी जल्दी उठना क्यों है, वो भी इतनी ठंडी में। आई मीन दिल्ली मुंबई पीपल माइट नॉट रिलेट टू दिस, बट आजकल तो ऐसा सीन है कि मतलब रजाई से पैर थोड़ा बाहर क्या निकल गया सुबह, ऐसा लगता है कि नम भी हो जाना है। और मोबाइल स्क्रीन छूती हूँ तो लगता है कि एल्जा का वॉलपेपर ही छू लिया हो, और मन करता है कि बिल्कुल रजाई के अंदर ना अपनी ही दुनिया बना ले। बट खैर, ये तो सपने ही रहेंगे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, ये सब इजी है? मतलब मजाक थोड़ी ना चल रहा है। आई मीन चल रहा है टेक्निकली। वैसे ये ना मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यार तेरा सरनेम बड़ा यूनिक है, बट नाम में प्रभु होने से मतलब कोई साक्षात भगवान थोड़ी ना हो जाता है। क्योंकि गॉड के फेवरेट बच्चे तो वही है ना, जिन्हें 5 मिनट में नींद आ जाती है, जिनके क्रश को उन पे क्रश होता है, और जिन्हें स्पॉटिफाई के वो घटिया एड नहीं सुनने पड़ते हैं। बट अगेन मैं ना ये नाम वाम में नहीं मानती, क्योंकि शेक्सपियर ने भी तो कहा था, व्हाट्स देयर इन द नेम। सो क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, क्योंकि ये है कॉमेडी क्लब हाउस, आइए मजे करें, ये कॉमेडी क्लब हाउस। TiltShift. That's my time, guys. Thank you. Thank you, Priya. First of all, how do you have so much energy on a Friday evening? समझ में नहीं आया. No, actually, I woke up late, so yeah, technically, yeah. Yeah, night out. Yeah. Great set, yeah. Great energy. And मतलब 100 marks for the effort. Guitar भी बजा लिया, बोल भी लिया, like you were doing Okay, everything. एक और चीज करनी थी, I forgot. Anybody who's curious कि मेरे बाल कैसे दिखते हैं, actually, this is how it looks like. So yeah, I was not joking, guys. Very relatable. Very relatable. Yes. I get that. Yes. I also have curly hair. I get the. नहीं जाऊंगी मैं उधर, मेरा भी rant session शुरू हो जाएगा like you, so I'll not go there. But great, man. Thank you. Thank you, Priya. For our next set, we have Ambarish Bhavkar from Clepsydra. Hi guys, I'm audible. हंस देना यार, मतलब सब शांत रहता है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को ही जोक सुना रहा हूँ. So start करूँ? So hi guys, my name is Ambarish और मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करता हूँ, तो मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ. आपने ये जवानी है दीवानी देखी है? तो उसमें जो बनी है ना, सस्ता बनी बनना चाहता हूँ बस. पैसा नहीं है ना. तो मैंने, मेरे दोस्त लोग भी है, तो उनको भी ट्रैवलिंग फोटोग्राफी करनी है, तो मैंने बोला कि चलो जाते हैं. सो मैंने कोरा पे डाला, विच इज द बेस्ट प्लेस टू डू ट्रैवलिंग फोटोग्राफी एंड हैज विमेन सेफ्टी. क्योंकि मेरे को है ना बचपन से बहुत कोरा पे भरोसा है, मैं ना हर चीज कोरा पे डाल के पूछता हूँ. मतलब मैंने ना पहले डाला था हाउ टू वेयर अंडरवेयर, कोरा ने मेरे को, कोरा पे मेरे को एक ने बोला कि लेट के पहनो, तब से मैं लेट के ही चड्डी पहनता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ. फिर मेरे को कोरा बोला कि दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस टू डू ट्रैवलिंग फोटोग्राफी एंड हैज विमेन सेफ्टी. तो मैं 4 मिनट सिर्फ सोचने में लगा कि सो आयरॉनिक, मेरा कोरा पे भरोसा ही उड़ गया कोरा पे से, सच्ची बोल रहा हूँ. उस दिन के बाद से मैं खड़ा रह के अभी अंडरवेयर पहनता हूँ. मेरे को लगा ये देखो. तो मैं दिल्ली गया, मेरा 4 दिन का स्टे था, तो मैं 1-2 दिन खींचा, मस्त हुआ. चौथे दिन में गया तो उधर एक लोकल नेता की रैली चल रही थी, तो वो लोग आए मेरे पास और बोलता है कि फोटो खींच. तो मैं सोचने लगा कि एक तो ये पॉलिटिशियन लोग इतना सोना पहनते हैं, ऐसे झुक के चलते हैं, एकदम बेड़ुक दिखते हैं, बेड़ुक. तो उनके पीछे भी जो लोग रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं रहता, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं. ऐसे स्लोगन, एकदम क्रिएटिव स्लोगन रहते हैं वो भी. 1 रुपए का चिंगम राहुल भैया सिंगम, 1 रुपए का चिंगम राहुल भैया सिंगम.
क्रिएटिव स्टफ यार। तो लोग आए मेरे को बोले कि फोटो खींच, तो मैं बोला कि गाइस ट्रैवलिंग फोटोग्राफी कर दो, ऐसे आयरे गहरे फोटो नहीं खींचता मैं। तो बोलते हैं अरे गाइस 50 रुपए देगा मैं तुझे। तो आप लोग को लगता रहे कैसे हरामी लोग है, हाँ, कि बेचारे को तंग कर रहे। तो मैं भी एकदम चौड़ में आके बोला कि 40 रुपए दे चल जाएगा। तो गाइस मुझे मेरा पैशन मिल गया ट्रैवलिंग फोटोग्राफी का। अभी मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे ट्रैवलिंग फोटोग्राफी करता हूँ। जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके मैं फोटो खींचता हूँ, 60 रुपए में 3। थैंक यू गाइस, दैट्स व्हाट मैं से। Thanks, Ambarish. थैंक यू। थैंक यू सो मच, यू वर ग्रेट। मुझे नहीं पता था ट्रैवलिंग फोटोग्राफी में भी इतना स्कोप है, मतलब इंडिया गेट के बाहर है। ग्रेट मैन, आई एम डेटिंग अ गाय हु इज अ फोटोग्राफर, तो ग्रेट। थैंक यू। बताऊंगी मैं उसको भी आइडिया, शायद वो भी कुछ कमाने लगे। स्कोप है। ठीक है। Next we have नैतिक गाला। नो, अच्छा हाँ, नैतिक गाला की टीम क्लब से सॉरी। Hello guys, am I audible? Yeah, shall I go? Hi guys, नैतिक गाला this side। और मैं बचपन से एंड्रॉयड यूजर रहा हूँ, तो रिसेंटली आई बॉट एन आईफोन। तो आई रियलाइज कि आईफोन में कस्टम रिंगटोन सेट करना कितना मुश्किल होता है। तुम लोगों को मालूम था ये सब? लाइक गूगल पे डाला तो गूगल पे ही 15 स्टेप आया, लाइक आईफोन पे कस्टम रिंगटोन सेट करने का 15 स्टेप्स। स्टेप 7 तक मैं खुद को पूछा कि मेरे को ये गाना सच में इतना पसंद है क्या। स्टेप 12 तक मैं रियलाइज किया, अरे मेरे को तो कोई कॉल ही नहीं करता, तो इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तुम लोग कोरा पे अगर डालेगा कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसका 7 स्टेप है, पर आईफोन पे रिंगटोन सेट करने का 15। हाउ टू क्लाइंब अ माउंट एवरेस्ट, 2 स्टेप, गो देयर एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग, पर रिंगटोन का 15। यू नो, आई रियलाइज कि इंटरनेट पे ना आजकल कुछ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, मतलब कुछ भी वायरल हो रहा है, कुछ भी। लाइक देयर इज दिस कोट, इट गोस लाइक सक्सेस इज when your signature becomes an autograph। मतलब क्या सोचे ये, कौन सोच रहा है ये? लाइक कौन चोमू है जिसको लग रहा है कि तेंदुलकर जो सिग्नेचर एफडी मारने के लिए, एफडी निकालने के लिए कर रहा है, वो जाके सबकी छाती पे कर रहा है? कौन सोच रहा है ऐसा? लाइक बिकॉज इफ यू आर rich and famous, you don't want your signature to be publicly available, right? नहीं तो एक दिन तुम फोर्ब्स के रिच लिस्ट में और अगले दिन सीधा क्राइम पेट्रोल के एपिसोड पे, लाइक करोड़ों रुपया अकाउंट से गायब। लाइक आपका योर ऑटोग्राफ इज अगेन बिकम अ सिग्नेचर। व्हाट अ रिवर्सिबल कोट। बट टॉकिंग अबाउट कोविड गाइस, कोविड की वजह से काफी बॉलीवुड लोगों का, काफी बॉलीवुड की जाने गई है बॉलीवुड लोगों की। सो मेरे को आदत हो गया था कि जैसे कोई मरता था तो मैं जाके उनका रीसेंट पिक्चर देख लेता था। तो जैसे सुशांत सिंह का डेथ हुआ, मैं धोनी देख लिया। इरफान का डेथ हुआ, मैं लंच बॉक्स देख लिया। पर फिर न्यूज आया कि अभिषेक बच्चन को कोविड है। भाई मेरी तो फट गई ना। मैं बोला गुरु तो देख लिया, अभी और कुछ देखना बाकी है क्या? पर बच गए, मतलब अभिषेक भी बच गया और मैं भी। सो टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड साथ है स्टार किड्स पे, लाइक आई मीन हैव यू हर्ड द न्यूज अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, आर्यन खान ही वाज कॉट इन अ एनसीबी ड्रग रेड। तो जब उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया तो उनका स्टेटमेंट था कि उनके ग्रुप के पास कुछ 6.5 या 6 ग्राम्स या मिलीग्राम्स गांजा मिला। एंड आई एम लाइक, इतना तो कुरला में पब्लिक रोल करते हुए गिरा देती है बे, उनका क्या होता? बट एनी स्मोकर्स इन द हाउस? स्मोकर्स गिव मी अ चेयर। कोई नहीं है? Oh, अच्छा सॉरी, मार्लबोरो कोड। एनी स्मोकर्स इन द हाउस? गिव मी अ कफ। सॉरी गाइस, हमारे गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है। आई एम नॉट सपोज टू जोक ऑन दिस स्टफ आई थिंक। बट ये कोई टेड टॉक नहीं है कि आप यहाँ के इन्फ्लुएंस हो जाओ। दिस इज अ कॉमेडी शो, डोंट गो स्मोकिंग अराउंड गाइस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जोक, met this Uber driver who was super chatty guys, who was super chatty, super friendly. Like I had this one cab ride, dude, it was so insane. Like
उनके 3 स्टेप्स होते हैं. दे फर्स्ट गो फ्रेंडली, देन फिलोसॉफिकल, और फिर खुद को अमिताभ समझ के हमको कंटेस्टेंट समझ के केबीसी खेलना चालू कर देते हैं. So like after a point, मेरा कैब ड्राइवर मेरे को पूछता है कि तुम कर रहा क्या है, क्या करता है तू. मैं बोला अरे मैं कॉमेडियन है. तो दैट्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन गाइस. और फिर उतरते हुए उसने मेरे को अपना बिजनेस कार्ड दिया, बोला सर इन केस इफ यू नीड. थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम. Thanks, man. That was a great set. Also, I don't know, team Clepsydra में इतने कोरा enthusiasts हैं. सब सवाल कोरा पे पूछते हैं. Great set, man. Only Great set. solution, where And you the find a thing is solution. कि he was asking कि are there any smokers in the house? तुमको क्यों लगता है कि ये 50 लोग की मीट पे 10 लोग हाथ खड़े करके तुमको पब्लिकली बताएंगे कि हम स्मोक कर रहे हैं? That's this thing about smokers ना. If I am a smoker, why will I tell you I am a smoker? Yeah, that's true. Publicly इज्जत तो मुझे भी प्यारी है ना. Great set, man. Thank you. Our next set is from Sultan Sheikh from Parallel. First of all, क्या भारी नाम है यार. Also, guys, please, all of you first unmute yourselves. It's very depressing that people are coming here performing jokes and nobody is laughing only. Like, मतलब ठीक है तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, but तुम हंस लो यार, तुम्हारे बैचमेट्स हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, हंस लो. So hello guys, I'm Sultan and मेरे कॉलेज के सीएल ने मुझे कॉल किया. उसने बोला ब्रो एक स्टैंड अप इवेंट है एंड आई थिंक यू शुड रियली पार्टिसिपेट. एंड आई वाज लाइक क्या मैं इतना अनफनी हो गया हूँ. सो आई wrote a set of jokes and it is my first time doing something like this, so please हंसना मत. Well I mean हंसना, but never mind, let's move. मेरी एक बहुत बुरी आदत है, अक्सर मेरे दिमाग में एक फनी इंसिडेंट चल रहा होता है एंड मैं उसको लीड कर देता हूँ एंड स्टोरी बोलते बोलते मेरा उस स्टोरी से मन हट जाता है और फिर मैं रुक जाता हूँ एंड माई फ्रेंड्स आर रियली फेड अप ऑफ दिस हैबिट. सो व्हाट हैपेंड दिस वन टाइम वाज, मैं मेरे फ्रेंड को स्टोरी सुना रहा था एंड उसने बोला वेल यू नो व्हाट, नेवर माइंड, जाने दो, नेक्स्ट जोक पे मूव ऑन करते हैं. मेरे नेबरहुड में एक कपल रहते हैं एंड दे आर स्लाइटली ओवरवेट. आई वंडर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दे आर इन. प्रोबेबली अनहेल्दी. मेरा एक फ्रेंड है, अनहेल्दी से याद आया बाय द वे, मेरा एक फ्रेंड है जो एक हफ्ते से बीमार था, तो मैंने सोचा चलो उसको कॉल करके उसका हालचाल पूछ लिया जाए. मैंने उसको कॉल लगाया, उसने बोला हेलो. मैंने बोला व्हाट्सअप. अब ये बंदा कांदीवली में रहता है. मैंने सोचा चलो इसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं. मैंने उसको पूछा ब्रो मेरे को कांदीवली में घर लेना है. तो वो बंदा फुल इंटरेस्ट के साथ पूछता है, मैंने उसको पूछा ब्रो कांदीवली में घर के प्राइसेस क्या है, मुझे घर लेना है. बंदा फुल इंटरेस्ट के साथ मुझे पूछता है ब्रो डिपेंड करता है तुझे घर कहाँ लेना है, कांदीवली वेस्ट या ईस्ट. मैंने बोला मिडल ईस्ट. बोलता है ब्रो कांदीवली, ये कांदीवली कॉल किया तूने, कांदीवल्ला नहीं. आई थिंक इंडिया में एलजीबीटीक्यू के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस वन टाइम, मेरा एक सालों पुराना फ्रेंड मेरे पास आके पूछता है, मेरे पास आके कन्फेस करता है कि वो गे है. एंड दिस इज हाउ द कन्फेशन वेंट. ब्रो सुल्तान तुझे पता है मैं गे हूँ. एंड आफ्टर अ रियली डीप थॉट मैंने पूछा क्यों. My friends think I'm unfunny enough to become a female comedian. I'm sorry girls, don't get offended by my joke. I have written a joke on male just to balance it out. तुम्हें पता है मेल्स का ईगो इतना छोटा होता है ना कि well you know never mind, let's move on to the next joke. The next joke is censored due to the violation of general rules and regulations of this stand-up comedy event. My cousin brother, he's 10 and still shits his pants. So this one time I really pissed off at him and yelled at him and he started crying. His mom, my auntie, came into the room while after listening to his voice and shouted at me for some stupid reason like scolding a 10-month-old boy. मेरा एक नशेड़ी दोस्त आके मुझे पूछता है ब्रो स्टोन होने की कोई अच्छी जगह बताना. अब मैंने लाइफ में कभी नशे नहीं किए, तो मैंने उसको बोला ब्रो द बेस्ट प्लेस टू गेट स्टोन इन माय ओपिनियन वुड बी कश्मीर. while the whole India says beti bachao beti padhao,
there's a state that says beti girao beti udao. I wonder what if Osama bin Laden what if Osama bin Laden plays an FPS shooter game with low internet? What will he be called? Osama bin lagging. मेरा एक फ्रेंड है, वो अपनी लाइफ से काफी सैड है. लाइक वो बंदा इतना सैड है कि फ्लिपकार्ट पे वो हैप्पीनेस बाय करने के ऑप्शंस ढूंढता है. उसने अपने लाइफ का स्लोगन बना लिया, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ. तो एक बार मेरे डिप्रेस फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और बोलने लगा, ब्रो मैं काफी डिप्रेस हूँ, एक बार आ जा वरना मैं तेरे से कूद जाऊंगा. अभी मैंने उसको बोला, ब्रो अगर तू अपने लाइफ के इस फेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो तुझे उससे बेटर है कूद जाना चाहिए. बट लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, मैं उसके पास गया, उससे बात किया, उसे काम डाउन किया और उसे लेस पेनफुल सुसाइडल वेज बताए. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स को कन्फेस करना कि वो गे है. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Nice set, man. Thanks, And do you Sultan. realize the fact that the judge, the person who's going to mark you, is also a female comic? Do you realize that? Also, he's brave And enough to miss. you had the guts to still do that joke. Also, no, it's fine. But also, it's not a female comic. This I'm telling to every person who's here right now. You do not say female comic. It's called women in comedy. So, like, do that next time, even if you are making that joke. Because otherwise, you will get cancelled from the scene very, very easily. I have banned people from my club who said female comic. Okay, so don't do that again. Sure. Okay, Sultan, thanks. Before we continue, let's just take a minute to thank our sponsors again. Our title sponsors, Color Bucket and Resume. Our co-sponsor, Art Value. Digital media partner, Utput News. Eyewear partner, MacB. Beauty partner, Blur India. And merchandise partner, Tees. So yeah, let's move on with the event. Our next performance set is by Natish Sharma from Sinex. So we have Natish Sharma. We don't have anyone from Sinex on the Zoom. Okay, let's move on. Our next set is by Anushka Jha from Jotun. Hi, am I audible and visible? Actually, I'm joining from phone, so I need a. Am I? Yeah, you're. Yeah. Okay, fine. Let me know when I can start. Yeah, you can start. Okay, cool. So, hi everyone, my name is Anushka Jha. So, let's spread some awareness. Let's talk about periods. Okay. So, all the boys out there and girls also. So, PCOD. किसको पता है PCOD मतलब क्या होता है? Especially boys. Anyone? Okay, even if you don't, let me clarify what it is. So PCOD is basically polycystic ovarian disorder. It's a female disorder. जिसमें symptoms होते हैं जैसे irregular periods, excessive hair growth और excessive hair fall and वगैरह वगैरह. But the main symptom, that is the male hormone testosterone level increases. So girls like me जो PCOD में सफर करती हैं उनके अंदर ये लेवल ज्यादा होता है. तो नॉर्मल लड़कियां जिन वो नॉट सफरिंग उनमें ये मेल हार्मोन इतना होता है, गर्ल्स लाइक मी इसका लेवल इतना होता है. तो बेसिकली हम लड़कियां फेमिनिज्म की रेस में इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं कि अब हमें लड़कों की भी जरूरत नहीं है. वी आर प्योर आत्मनिर्भर. ठीक है, लाइक वी डोंट इवन नीड गाइस, वी आर सफिशिएंट फॉर आवरसेल्फ. ठीक है, ओके. So since college life कभी उतनी बची नहीं है, let's talk about school. I have one of my really romantic incident to share with you all. So I know कि sex education is so much important and अभी काफी awareness develop हो चुकी है, but I feel love education में थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए थी यार स्कूल में. मतलब syllabus में होता कि how to ask a girl out, how to slide into her DMs, how to know her yes is actually a yes and no is actually no, and so on. So there was this one guy who was deprived from obviously this love education. He was a nerd, shy guy who didn't know actually how to ask a girl out. So he wrote a love letter. No, actually love letter नहीं था. It was a love contract wherein he stated, his name was Akash. So hi, I am Akash. I like you. Do you like me? Question mark. And then he left 2 spaces in the bottom. एक साइड उसने अपना साइन किया
और उसने लिखा साइन डाउन इफ यू लाइक मी बैक, और मैंने दूसरी जगह पे लड़की के साइन की जगह छोड़ दी. This was the most romantic thing he could ever thought of. Like, he could have asked his best friend or her best friend, but no, he decided to write a love contract. And he was just thinking कि यार इसको इस लड़की को कैसे पता ये story? Because that girl was me. Okay. So now coming back to a college, तो अभी उतना ज़्यादा बचा नहीं है, but I'm thinking like अभी since this month से college is starting, like next week or most probably next week. So colleges खुल के सबसे पहले चीज़ आता है local train. So I was in my junior college wherein I didn't know actually how to travel from local trains, and I was wearing this one fancy outfit and at a peak hour. So मैं heels पहनी थी and मैं बस train में चढ़ तो गई, then I realized oh heels was a bad idea. So एक हाथ में heels मेरे, एक हाथ में handle train का, और मैं कैसे तो कैसे घुसी चढ़ी पड़ी और train के सीट के कॉर्नर में आके खड़ी हुई. जब मैं आके खड़ी हुई तो तब तक में वो आंटी बैठी थी. उन्होंने मुझसे पूछा बेटा महालक्ष्मी, फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट महालक्ष्मी इज अ रेलवे स्टेशन इन मुंबई. सो महालक्ष्मी कब आएगा? मैंने बोला आंटी आएगा एक स्टॉप बाद आएगा ना. ठीक है बेटा आएगा तो मुझे बता देना ना. मैं खुश, मैंने बोला अब आंटी जाएगी, मैं बैठने की मुझे जगह मिल जाएगी. थोड़े मिनट्स बाद अनाउंसमेंट होती है पुढचा स्टॉप महालक्ष्मी. मैंने बोला मैं खुश, मैंने बोला आंटी आंटी अगला स्टॉप महालक्ष्मी है. आंटी ने बोला नेक्स्ट स्टॉप है. मैंने बोला हाँ आंटी. आंटी ने हल्के से अपनी तशरीफ उठाई, आंख बंद किया और बोला जय महालक्ष्मी और बैठ गई. This was the biggest lol moment of my life I could ever think of. So अभी ट्रेन की बात हो रही है, so I feel like everybody is in your wanderlust. If I see my Instagram, लोग गोवा से लेके कश्मीर से लेके मनाली हिमाचल पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, but I am in Bihar. इस बात को कोई मलाल नहीं है, काफी बिहार जोक्स हो चुके हैं मुझ पर. महाराष्ट्र में कहते हैं ना कि एक बिहारी लाख बीमारी, समथिंग लाइक दैट. अभी उतना रहा नहीं है मेरा ना, मैच्योरिटी लेवल काफी हाई हो चुका है, तो आई डोंट माइंड. ठीक है, बट व्हेन आई से आई एम फ्रॉम बिहार है, तुम बिहार जब बात वर्ड सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में दो चीज आती होगी, एक लालू, दूसरा भोजपुरी सॉन्ग. तो आई वुड लाइक टू सिंग वन ऑफ द सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू मी. आई मीन उसके लिरिक्स पे ध्यान देना, आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है. So the song goes, लव करके भागे हैं घर से, लव करके भागे हैं घर से, बिहार लौट न पाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, यूपी में बिहार में बस जाएंगे. इतना कन्विंसिंग गाना, इतना डेप्थ इस लिरिक्स में, इतना डेप्थ था कि मतलब अभी के बादशाह नेहा काका टोनी काका के है नहीं यार कुछ. ये है ओरिजिनल म्यूजिक, ये है ओरिजिनल सॉन्ग. So yeah, that's it my side. Thank you so much. Thank you so much. Really could relate. दिल्ली से हूँ मैं वैसे, तो यहाँ पे लोकल ट्रेन तो चलती नहीं है, बट मेट्रो का भी कुछ यही हाल है. तो एक बार can I just share something? Yeah, sure. So एक बार मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी. So I kept my bag. There's this checking, I'm sure वहाँ की भी मेट्रो में होता होगा. There's this checking place ना, तो मैंने अपना बैग रखा. तो वो पुलिस वाला जो वहाँ पे बैठा था, स्कैन जो देखता है उसमें से, वो उठ के ही आ गया मेरे पास. ठीक है, एंड आई वाज वेयरिंग अ क्रॉप टॉप एंड जीन्स, तो ही वाज मेंटेनिंग डायरेक्ट आई कांटेक्ट विद माय बेली. ठीक है, एंड देन ही वॉक्स टुवर्ड्स मी एंड ही इज लाइक मैडम बैग में क्या है? मैं कहा कुछ नहीं है. कहता आपके बैग में चाकू है. आई एम लाइक नहीं है. कहता है. मैं कहा नहीं है. उसने ले लिया मेरे से बैग, उसने बैग खोल लिया, नेल फाइलर निकाला इस आदमी ने अंदर से. ठीक है, देन ही इज लाइक क्या गला कटेगा इससे? आई एम लाइक काट के देखूं? इज लाइक अच्छा नींबू कटेगा इससे? इज लाइक नींबू कटेगा इससे? मैं कहा मुझे नहीं पता. ये बंदा जाके नींबू लेके आया है, वो बैठ के नींबू काट रहा है. नींबू कट गया, उसने वापस फाइलर बैग में डाला. ही इज लाइक जाओ. बट द थिंग इज ही वाज स्टिल मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद माय बेली. I'm like, excuse me, you can't look at me like that, okay? He's like, मैडम इतना चिल्लाते नहीं है, प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता. ये लो नींबू खाओ. And this is a real incident. I'm not even kidding. Thank you so much though. Let's keep the show rolling. Yeah. Let's hope our next contestant is as savage as that guy. Up next we have Ratnesh Naidu from Barbados.
Hello, am I audible? Yeah. Yeah. Okay, so my name is Ratnesh Naidu and I'm single. So, like I can see here 49 participants. So if any girl like finds me cute or good looking, so she can DM me. So my Insta ID is 9003 Ratnesh. So अबे if you want चल 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 अपना कॉमेडी चालू कर ये सब पागलपंती मत कर इधर PRCL, अरे पर मैं इससे क्यों डर रहा हूँ? मैं तो ACL हूँ. ए PRCL, म्यूट पे जा. चल. Sorry for the disturbance, guys. So I was telling that. सॉरी गाइस, लाइक मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ बिकॉज लाइक मैं सोच रहा था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी में क्या टॉपिक बोलूँ. लाइक मेरे लाइफ में इतना कुछ कॉमेडी हुआ है. तो लाइक आई विल शेयर वन इंसिडेंट. एक हादसा हुआ था मेरे साथ. हादसा ही बोल सकता है, एंडिंग में मालूम पड़ेगा हादसा क्यों है. तो मेरे जूनियर कॉलेज में लाइक मेरे 2 दोस्त थे, टोनी एंड सैम. तो उसमें से एक सैम था, उसको एक लड़की पसंद थी दिशा करके. तो उसको लगा कि वो लड़की भी उसको लाइक करती रहेगी. तो फिर एक बार क्या हुआ कॉलेज में, दिशा केम एंड शी टोल्ड सैम दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग, मीट मी आफ्टर कॉलेज टुमारो. तो सैम वाज लाइक यस यस, उसको लगा कि ये अभी अपनी दिल की बात बोलेगी. एंड सैम अपने फुल ड्रीम्स में एकदम चला गया कि अभी कल मेरे साथ मजा आएगा, मेरे को मस्त प्रपोज आएगा. एंड वो पूरे ड्रीम्स में चला गया. लाइक मैं उसके साथ वॉक कर रहा था स्ट्रीट पे, लाइक ही एक्चुअली स्टेप ऑन शिट और उसको मालूम भी नहीं पड़ा. मैं बोला भाई क्या कर रहा है तू? तो ही वाज लाइक अरे भाई यही तो प्यार है. मैं बोला भाई अगर ऐसा प्यार है तो मेरे को नहीं करना है, मैं सिंगल ही ठीक हूँ. तो लाइक फिर दूसरे दिन वो एकदम प्रॉपर ड्रेसिंग करके आया, फुल क्लीन शेव, परफ्यूम व्यूफ्यूम मार के. एंड फिर दिशा वाज लाइक अरे आई वांट टू टेल यू समथिंग. तो सामने बोला यस टेल. तो दिशा वाज लाइक आई लाइक, सिर्फ उसने बोला आई लाइक. और हम गाइस तो है ही, मतलब आई लाइक किसी ने बोल दिया तो हमको लगता है भाई ये मेरे को ही बोल रही है कि आई लाइक यू. तो सैम वाज लाइक या मेरे को मालूम है तू मेरे को लाइक करती है, लाइक मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, अपना आई कांटेक्ट हो रहा है, दिस दैट, फुल फिल्मी डायलॉग मार रहा है. देन दिशा वाज अरे इतना ख्याली पुलाव मत पका, चलती ट्रेन में चढ़ रहा है तू, मेरे को पूरा बोलने तो दे. तो सैम वाज लाइक उसको लगा कि हाँ चलिए अपनी मुंह से ही बोलेगी, मेरे को प्रपोज करेगी. तो दिशा वाज लाइक अरे एक्चुअली आई लाइक वन ऑफ योर फ्रेंड टोनी. तो वो फुल सदमे में चला गया, उसको लगा अभी ये क्या बोल दिया उसने. एंड आई वाज लाइक सैम तू ठीक है ना, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है. एंड देन फिर टोनी आया. एंड मैंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया टोनी कैसा है. लाइक हिज ड्रेसिंग इज ही वेयर्स अ शूज लाइक एडिडास का जो 10th कॉपी रहता है ना, एडिबास, दैट काइंड ऑफ शूज एंड दैट जीन्स जिसपे पोस्टर लगे रहते हैं, जिसपे उसका घुटना लटक रहा है, फटा हुआ जीन्स, नियॉन बनियन, दैट शर्ट. एंड अगर आपको ऐसा कोई दिखे तो मतलब कंफर्म है कि उसका बाल गोल्डन, पिंक, रेमंडी ग्रे ऐसे ही कलर का होने वाला है. सेम उसका भी बाल गोल्डन था. और उनका 2 चीज कॉमन रहता है, या तो वो स्मोक करते हैं या तो दे ईट गुटखा. तो टोनी वाज लाइक ही यूज्ड टू ईट विमल. so he came and Disha was like अरे टोनी एक्चुअली I like you. तो टोनी वो अब बोल रहा है लाइक ही वाज टॉकिंग. तो मैंने बोला अरे भाई वो कुछ अच्छे से कुछ बोल रही है, प्रपोज कर रही है, तो थोड़ा विमल थूक के बात कर, मतलब थोड़ा अच्छे से कन्वर्सेशन कर. तो उसने ऐसा करके थूका. एंड देन दिशा वाज लाइक ओ हाउ कूल, ही स्पीट इन अ सो नाइस वे, आई गॉट फ्लैटर्ड. मैं बोला इसमें फ्लैटर होने जैसा क्या था यार? मतलब तू पान टपरी में जाएगी, किसी भी पान वाले को देख के तू फ्लैटर हो जाएगी. मैं बोला सैम तू ये बंदी को पसंद करता है, ये क्या है तेरा? एंड देन फिर सैम एंड ये टोनी एंड दिशा देन हग्ड ईच अदर. एंड फिर हम लोग साइड से निकल गए. बताओ क्यों? बताओ बताओ, एनीवन? उधर थूका था? नहीं, एक्चुअली मैं हाँ टोनी यार। की टी शर्ट पे लिखा था कि जो हमसे जले वो थोड़ा साइड से चले. तो मैं तो साइड से चला एंड सैम तो और साइड से चला गया क्योंकि उसकी पूरी जली पड़ी थी. एंड फुल वो डिप्रेशन में चला गया. मैं बोला अभी भाई ऐसा थोड़ी ना, अभी ठीक है यार, एक लड़की है उसमें क्या है. तो नेक्स्ट डे मैं कॉलेज में गया एंड आई सॉ दैट कोई एक बंदा ऐसा KTM RC में आ रहा है. तो मेरे को लगा टोनी ही रहेगा ये. मैं ऐसा मतलब आगे गया, मैं देखा अरे ये तो सैम है. मैं बोला भाई ये क्या तेरा गेटअप हो गया है, एडिबास का शूज फुल टोनी लुक करके आया है. तो ही वाज लाइक अगर उसको टोनी जैसा लड़का पसंद है तो मैं वो बनने को तैयार हूँ. मैं बोला भाई तू पागल है, क्या कर रहा है? बोलता मैं कभी गिव अप नहीं करता लाइफ में. मैं बोला भाई गिव अप तू क्या बोल रहा है, फिल्मी डायलॉग, उसके लिए इतना कुछ क्या कर रहा है तू? फिर जैसे ही सैम ने एंट्री किया, लाइक जो भी कॉलेज के सब लड़के थे, लाइक उन लोग उठे और अपने बम पे टैप करते करते गए. बताओ क्यों? बताओ, एनीवन?
अरे कोई तो बोलो यार। उसके शर्ट के पीछे कुछ तो लिखा था। नहीं, उसका, हाँ, उसके टी शर्ट में लिखा था, अपनी चलती है तो दुनिया जलती है। आई नो दैट वाज अ बैड जोक बट स्टिल। एंड देन फिर वो चल के गया, देन दिशा केम, एंड दिशा ने फुल ऐसा वाइट ड्रेस पहना था, फुल मेकअप नहीं है एंड ऑल, ऐसा मतलब फुल विधवा जैसा बन के आई थी, जैसे उसका पति मर गया ऐसा। तो सैम गया, लाइक ही आस्क्ड अरे क्या हुआ? तो दिशा वाज लाइक अरे आई ब्रोक अप विद टोनी। तो सैम के मन में लड्डू फूटा कि क्या टोनी गया है रास्ते से, अभी मेरा तो फुल चांस है, मैं तो कुछ भी करके प्रपोज कर लूंगा। तो पर दिशा वाज लाइक अरे नहीं नहीं, ही वाज माय फर्स्ट लव और अभी मैं रिलेशन में नहीं आना चाहती। सैम वापस सदमे में, बोला भाई तू किस कौन से लड़की के पीछे पागल हो रहा है जिसको टोनी जैसा लड़का पसंद है। फिर वो थोड़ा माहौल ठीक हुआ, लाइक उसको फिर मैं घर पे लेके गया। एंड घर पे पहुंचा तो मैं घर का बेल बजाया, उसकी मम्मी ने डोर खोला। उसकी मम्मी ने मतलब मेरे को पहचान लिया कि रत्नेश है करके, बट वो अपने बेटे को नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने जो ड्रेसिंग किया था ना, उसकी मॉम बोली ये कौन है मवाली, क्या है ये, क्या क्या करने आया है? तो ही वाज लाइक अरे मम्मी सैम हूँ मैं आपका बेटा। तो उसकी मम्मी ने जो उसका ड्रेसिंग देखा है, गोल्डन बाल, विमल खा रहा है, उसकी मम्मी ने उस धाप धूप जो उसको मारा है, मतलब उसकी मम्मी का फुल गोकू सुपर सेन मूड ऑन हो गया और उसको मारी जा रही है, ऐसा फुल चॉक फ्लेम दे रही है, पंच मार रही है, ये वो ये। फिर उतने में स्टैट से एक नेबर गया उनके बाजू का, एंड उसकी मम्मी ने उसको इतना जोर से मारा कि उसके मुंह में जो विमल था ना, एक्चुअली वो अंकल के शूज पे गिरा। Ratnesh, your हाँ, time's up. Sorry. ओके ओके ओके। Anyway, Thank you that was so a much. Thank great you so much performance. for performing. थैंक यू Also, थैंक यू। pro tip, अगली बार चश्मा मत लगा के आना अगर लड़की ढूंढनी है तो। Just नहीं saying. नहीं, एक्चुअल में एंडिंग क्या था Oh कि वो shit, बंदा मैं हूँ। your eye has something. Are you द fine, एंडिंग dude? वाज लाइक दैट द सैम कोई नहीं था, वो बंदा मैं था, एंडिंग वो था, बट बिकॉज ऑफ टाइम इशू मेरे को नहीं बोलने Uh, मिला वो। Oh थैंक God. यू गाइस। So this is for real or you just did नो नो makeup? नो, इट्स अ You did मेकअप। makeup now? Okay. Okay, cool. Thank God. थैंक यू। next we have Rachit Advani from Amunis 98K. Hi guys, hi guys. I hope I'm audible. Yeah. So, so shall I Hold, start? Should I hold start? on. Tech team, I can you? can't see you. Yeah, Yeah. Yeah, now you you can can see me. start. Yeah. Yeah. Okay. So hi guys, I'm Rachit. I actually am the CL of Aminus और मुझे कोई नहीं मिला, so I have to do it क्योंकि points are very important for us. Okay, so पहली बात रत्नेश, तू पहला कॉमिक नहीं है जिसने मार खाया है. And Prabhu, ओके you should have gone for Desi Spacey rather than coming for stand-up. Yep. So अभी it is like a pretty sunny day out and बहुत मस्त है. Birds are chirping. I love birds, but the thing is they're chirping because उनमें से एक गया. A cat killed one, so yeah, but they're still chirping and किसी का समझेगा नहीं because birds रोए हंसे, they just chirp. But it sounds so blissful. Like come on. So Abhi, like I'm doing it for the first time, so it must be lame. And I know writing a stand-up comedy is pretty difficult क्योंकि मैंने मैम का इंस्टा स्टॉक करा एंड उन्होंने सेम एक एडवर्टाइजमेंट वाला जोक 3 बार रील में डाला. सो उधर से समझ गया it has to be very difficult. And I am like pretty sure I'm not good at it, but I have to do it. So let's like do it. So okay, so I turned 18 last year in 2021 in September. And like every 18-year-old has a dream, right? Royal Enfield, Thar, Goa. They just want to break free. मेरे को Tinder join करना था because I've been single for 18 years now. 19th year चालू है. Super. And yeah, it is pretty obvious that a guy who has a like goatee and has messy hair cannot get a girlfriend, and that's pretty annoying for me personally. But क्या करे? And मैंने इसके लिए ये रखा है because I wanted to look like a stand-up comic, homeless in short. Yep. So it is what it is. But one day मेरा किस्मत चमका. Like ऐसा लगा कि रणवीर सिंह came back to his civilized look और उसने normal कपड़े पहनना चालू किए rather than wearing a leopard skin, which is so nice. But okay, never mind. So let's go ahead. So I got a Tinder date. She was 22-year-old, tall, dark, and handsome. And she was literally funny, and I liked that thing about her.
we also like used to chat a lot, and जो भी होता था, it was very fun. But then I got friend zoned, obviously. Her ex came back, who was similar to Ratnesh, superb. And yeah, so हमने तो बात करी, we are still friends. Since September till February 4th, I have made 12 friends via Tinder, even though it is meant for dating and not for making friends. Friends to Instagram पे होते हैं, but like never mind. Ouch. And yeah, but it was sad. So I had nobody to talk about it. And like obviously I used to look pretty depressed. पहले ऐसे look है. Mummy Papa felt I'm a junkie. My juniors are scared of me. So cute. And they were like, Rachit, you're fine, right? Like if there's something you can tell us, and we are your best friends. I took it too seriously, and now they have content to roast me. And whenever I do something wrong, like मैंने कभी 9:30 को नहा लिया कि बाहर गया था अभी आया हूँ, इसके लिए बंदी पटी नहीं, देख अपने आप को किन्ना. एंड किन्ना इज अ सिंधी वर्ड फॉर डर्टी पर्सन, एंड आई एम अ सिंधी. तो उन्होंने वो भी बोला है. whenever like मैं मेनू कार्ड देखता हूँ, ओके, whenever आई सी द मेनू कार्ड, लेफ्ट साइड से ज्यादा मैं राइट साइड पे देखता हूँ, which is the prize one. So they are like कि तू पैसा देखता है, अच्छा वो गर्लफ्रेंड पटी नहीं, उसको तू बर्गर के बजाय वड़ा पाव खिलाता. Unfortunately, these jokes are very lame because तुम लोगों ने restriction रखा है, and I cannot crack any अच्छा खासा joke, which is all right. But I have one thing, कि like talking about birds, which I was talking previously, but I forgot, obviously because I'm scared. But okay, so talking about birds, when like birds chirp, they are like choo choo choo. And मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे कौन बुला रहा है. Not because it has chew in it. My घर का नाम is Rachu, Rachit, Rachu. So like that's why I sometimes feel R is silent. मैं थोड़ा deaf भी हूँ because I kind of make music. I'm into music. So 24/7 I'm into music, and उसके वजह से, but all right. So life is pretty great. Date तो नहीं मिली, but I'm still trying. I'm very optimistic. Okay, I'm very optimistic. I'm the most optimistic person, and my optimism is as beautiful as Cinderella. But it vanishes like Cinderella only after 12 a.m. So मैं कुछ कर नहीं सकता, but all right. It is what it is. Some African guy said it once. And yep, I took that too seriously. And I have been following it since day one only now. And क्या कर, so this is it. मेरे को और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है. Improv था full. I'm sorry. Yep. So that's my time. Okay, voice Thank crack you. भी हुआ. Thank you. Thanks, Rachit. I love the fact that Rachit's set was so cute. He feels कि अगर restrictions ना होती तो वो funny होता. मतलब very cute, dude. You're super cute. थोड़ा self confidence रखा है. Like 12 a.m. के बाद I'm जाता है kidding. मेरा time. Okay. I'm तब kidding, तक dude. है. Yeah. You were good. You were good. I I could sense that every bit was very improv, but Yep, great. it was. Great. And also about the reel, so there's this new feature on Instagram where two people can collaborate, Right. right? So I actually know that, but I wanted to say something for the yeah. content, so No, I I'm had to. just Don't saying. correct me there. मेरा No, I'm points, not and yeah, correcting you. we थोड़ा lenient with me क्योंकि first time है, and if I don't do well, मैं top 3 में नहीं आया, I will be like Vanshika Arora demotivated me, and I will never learn more. So This guy is blackmailing me in front of 47 people. I don't care. I just want that It's top 3 wala. Yeah. what do I say it? All the scores are very close. Yeah, Okay, there's because all are lame. 0.5, 4.5, 2.5, 3.5 out of 10. no, not that low, but yeah, they are pretty close. All of you were, I mean, funny. So it was good. Great. Let's call the next act. Thank you so much for performing. Yeah. Let's call the last person. Yeah, the last set for today is from Naman Parikh from Mythos. Is he here? Naman Parikh Hi, from Karthik. I don't think there's anyone from Mythos. Asha.
So yeah, that was our first round for comedy. I hope you guys enjoyed it. But now it's like now's the time I think everyone was waiting for our improv round. Uh, so now it's time to put your wits to the test. Let's begin with our improv round. For those who don't know, improv stands for improvisational comedy. Here, the comics have to try and entertain the audience on the spot, and there's no way they could have prepared for what we have in store for them. So we have two games. So the name of the first game is Screen Froze. Okay. So so in this game we have merged two improv games together. So like I'll try and explain the games. The first game is the alphabet game. Are you guys aware of the alphabet game? So if you're not, so basically the audience gives them a location and the participants are divided into many teams beforehand randomly. They have to come together and they have to act a scene. The based on the location that the audience has provided. So in the alphabet game, each participant will start his sentence with an alphabet, and the next participant has to continue the scene with the next alphabet. For example, I start with A, then Joshua is the next participant, he starts with B, and and so on. So that's how it goes. So yeah, are you guys clear with it? Can you repeat it once if you don't mind? Because pura bouncer Yeah. gaya. I'm sorry. Like We'll play alphabet, a, like A, B, C, D, and yeah. even okay, got it. I've seen this in like some comedians YouTube video. I'm not sure. Okay. Yeah, हमने चुराया ही है Copy इधर किया से. है? Shit यार. Samay Just Raina, I guess. like I'm not sure. just like Gala, उसने भी copy किया वो Malpro वाला. Nice, nice. Oh, अच्छा ठीक है. So I'll explain again. Is Joshua here? Hello. Sir. Yo. Yeah. So we'll play a trial round and we'll show you like we'll give a very lame example. It's your job to be funny. It's not ours. So let's say we are at a club and I am participant one. So I have to start with A. Okay. So I said, और क्या चल रहा है? So Joshua has to start with B. Bro, don't ask me about it. I'm still single. So now the next participant has to start with C. Now we only two of us are there, so I'll start with C. So minus चल यार दारू पीते. So on and so forth. So that like that. So we have already divided you guys in teams. So that was the first game. For screen froze, we also have another game in the same like screen froze where you only have to answer in questions. So you can't say sentences, you only have to answer with questions. So again, Joshua, start कर. कैसा है कार्तिक? मैं क्यों बताऊं? You have to ask a question only. You don't have to answer it. It has to No, be. you only have to answer in questions. Okay. Like You question, only how have to you- question. You can't answer. Okay. Question, Yeah. question, no answer. Okay. Yeah. And this by is question. mistake, imagine what if we answer? Okay, so will there be any You're negative out. marking or we Mark are नहीं negative मिलेगा. निकल गए? Negative marking if There you will be answer. negative marking. Yeah. Okay, Yeah. cool. So these are the two games, and that's the whole point of screen froze. So you all will be starting with the alphabet game. A scene will be given by the audience, which is improvisational, and every time Karthik says scene froze, we shift the game to the question game. But the situation has to be the same. You have to continue your story, but the game is different. Okay, मतलब second game में question only रहेगा. Right. Okay, As so soon as I there is like each group has 4 people, so you'll give them like 1, 2, 3, 4, and they have to say it in sequence. और जिसके मन में आया वो बोलता रहेगा. जिसके मन में आया वो बोलता रहेगा. और chaos होगा ना फिर अगर मुझे भी बोलना है, मुझे limelight चाहिए, उसको भी चाहिए, वो भी बोलेगा तो ऐसा होता है. That's what you think, but when you're put on the spot, it's really difficult to come up with something, and that gives you a lot of time to think. The alphabet. Please we can reiterate, although the message was sent, but just for clarification, reiterating the teams which are there. Yeah, I'll do that. Let's just make sure everyone understands the game. So I think Joshua, for the alphabet game, we'll have to give them an order. नहीं तो फिर
It's Initially, I okay. think we can go with order. All right, works. Also, if I don't know the names and the names of the team, so it will be difficult for me to mark if We'll there's be no order. we'll be putting them on the screen, but okay, we can choose an order if you want, ma'am. The order is according to the list which you have in your sheet. That's fine. Okay, so that was the first game, screen froze. So whenever I say screen froze, you have to change the game from the next one. So if questions wala game chal raha and I say screen froze, you have to jump back to the alphabet game and I'll let you know from which alphabet you have to start. Okay. So I'll read out the teams first. I have one doubt. Yeah, go on. जो क्वेश्चन वाला गेम होगा तो वो जो अल्फाबेट चालू है उसमें से नहीं करना है ना, वो कैसे भी पूछ सकते हैं ना, सिर्फ सीन वो नहीं, हाँ सीन वो रहेगा पर you don't have to follow the alphabet rule. You have to just ask or like say questions. Cool. Okay, so in team 1, we have Soumitra Lovalekar, Natish Sharma. I think Natish Sharma is not here. Anushka Jha and Rachit Advani. So we three go or No, I'll just mention all the teams first and then we can start. okay. So maybe you can follow this order. Soumitra Lovalekar, Anushka Jha, Rachit Advani. Okay. The order I have is Sumitra, Natish, Anushka, Rashid. Natish isn't here, ma'am. Natish isn't here. Okay. He didn't show up. So this team 2 is Akshay Anand, Naitik Gala, Ratnesh Naidu and Naman Parikh. Is everyone here? Yeah. Yes. I don't think Naman Parikh is here. He wasn't there for this set. So he won't be here. So Akshay Anand, Naitik Gala and Ratnesh Naidu. Go as a team 2. You can follow It'll them be all. It'll be Akshay, Ratnesh, and then Naitik. Ma'am, is that the order in your list? The order is Sumitra, Anushka. No, ma'am, for Rachit. team 2. For second team. Okay. Yeah, that's the order. Akshay, Ratnesh, and Naitik. And Naman he's is not there. here, right? Naman is not there. Yeah. Okay. And for team 3, we have Priya Prabhu, Ambarish Bhankar and Sultan Sheikh. That's the order. I'm sorry, I got lost connection. Did I miss something? No. It's fine. Priya Prabhu, Ambarish and Ratnesh. No, Priya Prabhu, Ambarish and Sultan. Sultan. Anushka, do you know your team? Me, Yeah. Rachit and one is not there and the other. Sumitra, me and Anushka. Yeah. Yeah, there. Sumitra कौन है? Can you just say something? अरे वो Sachin, that tall Sachin, that skinny Sachin. Yeah. Can you just say something? I don't know who is he. World like for bot streaming. Okay, hi. Okay. Sorry. I'm sorry, but who is he? I don't know. We'll spotlight him while Tech team. Can we pin Soumitra, Rachit, and Anushka? And Rachit. Yep, me also, please. Okay. So I know you guys are divided in teams, but you're still competing against each other. So keep that in mind. Okay. Okay. Last thing. What is the sequence? And who is first and second and third? Just Soumitra is first. Okay. Anushka, you're second, and Rachit is third. Okay. Cool. Okay, so let's start with screen throws. Can we have a location
from the audience. You can put it in the chat box. Anyone can suggest. Okay, Sairaj has suggested airport. Airport, okay. A lot of people are saying we'll go with the airport or. Ma'am, do you have any preference? Which one do you want to choose? This is a very clean comedy show, so I am getting a bit bored. Somebody said brothel. Let's do brothel. Okay, brothel fixed. Okay, What's tech. fixed? What's fixed? Brothel. Damn. Okay. All right. Team tech, just make sure that no faculty enters the meeting. All right, and we can have ourselves. So you can start. A, right? I should start with A. Yeah. आज तेरी माँ नहीं दिखी काम पर. बता वो बिल्डिंग कौन सी है? जहाँ तेरी माँ बैठी है. Oh, that's it. Wait, I got kind of okay. You're not off to a great start. No. Okay, so once anybody makes a mistake, you can start with D, Soumitra. Shall I? Okay. देख उधर बाहर देख कौन. इधर आके बात कर. गान तेरा लाल है. हाथ में क्या पकड़ के बैठ रहा है? इधर आके बात कर. जाना बे. इंक्स बता तेरे पहले. लंबी लंबी बातें करा लो बस तुम लोगों से. Alright, screen froze. Wait, I couldn't hear it. I'm sorry. Anushka, It's screen freeze. It's screen freeze. You can only ask questions now. Okay. मन क्या है तेरा? ना बड़ा है तेरा मन. I can't hear. Yeah, go again, Soumitra. Sorry, I can't hear. ना बड़ा है आपका मन. Anushka, can you hear us now? So I can't say it the third time. Come on. It's robotic sound. Just, I'm so sorry. I'm so sorry. It's sounding robotic to me. I mean. Is it that way for everyone, or is it just? No. It's just her. It's just her. Rachit and Soumitra all can continue the scene. Yeah, Rachit, continue. Okay. Sorry, continue. Okay, so I should start right now. Or like Yeah. Only questions. Oh, kal Same kya same area. Okay, fine. Sorry. Can I now? Continue. Go on. Oh, तू क्या कर रहा नहीं है? Yeah. Are you having a stroke? You don't have to follow the alphabets in your question. I'm just letting you. Rachit. Okay. Now I got it. Thank you. He's struggling. ठीक है, Soumitra, you can continue. तो बाल कभी काटेगा? कौन से वाले? I have no idea how we're going. Please. Now it's you and me only. Oh, okay. She's still there and it's thoda scary and she. Yep. Just go on. Just continue. Okay. What was your last thing? I'm so sorry. कहाँ के? अभी तू बता. मेरे पास 3 जगह है तो तू बता. वेलक्रो कहाँ पे होगा? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तू बता. अरे Screen froze. You have to start with M. That's it. Me, okay. मैं जा रहा हूँ तेरी मम्मी के रूम में. What? नहा ले पहले बास आ रहा है. Oh,
तू गांड मरा ले. And scene. Okay. I don't think this is going anywhere. Yep. It's okay. It's okay. I'm All right. sorry I chose Just, that topic. I mean, you Nah, guys it was made a- me it was- regret. It was a You good guys topic. did. We just were It really was a stupid. good. We're- No, you all were right. good. You were good. Just an announcement. We can have sets like these, but just try not to curse or swear while doing the set. because Really try. that is- What do you expect from that place, dude? Like, I it's mean, like, Your That's mom, to be no, honest, no, no, but he no. just- That's not the point. Doesn't you don't have to curse because no, that's is- not okay, my acceptable. bad. you're Cursing is clearly something else. 18. My bad then. Yeah. Eeks. Okay, so can we have team 2 on screen? जो भी team 2 में, can you guys raise your hands to the tech team here? For team 2, there is Akshay, Ratnesh, and Naitik. Perfect. And Akshay. Okay, so can we have another location in the chat box? Wait, what's our order? This thing? Somebody Yo, suggested this unisex salon, unisex washroom or something. Do that without the Okay. cursing. Okay, Okay. so the location, the situation is if 3 of y'all in a unisex restroom. The order is Akshay, Ratnesh, and Naitik. And y'all can start anytime. Yeah. Ah, I see you got some new stuff down there. Huh? बाथरूम जाना है, बाहर आ जा. चौक किधर है? तेरा नंबर लिखना है मेरे को. Dude, इतना profane मत बन यार. अरे यू तू कितना स्मेल आ रहा है. You guys have to continue, right? Wait, Yeah, Naitik. is it Naitik? I couldn't hear you. मैंने बोला ई क्या यू कितना smell आ गास रहा आ है? रहा है, स्मेल आ रहा है. F are the F. Sorry, हाँ A B C D E F yeah, right. फालतू का पास है बे इधर. Guys, मैं तो नहीं हूँ. तो who is it? हाँ हाँ, क्या जोक मारा है. Screen froze. Now it's questions only, right? Yeah, Right. you continue. Am I supposed to be here? I don't know who you are asking. पूछना क्या चाहता है तू? मैं इधर क्यों हूँ फिर? Bro, तू क्या करने के लिए आया इधर? मेरे को भी नहीं मालूम तू क्या कर रहा है इधर. मैंने तो बोर्ड भी नहीं देखा था. भाई चश्मा पहन कुछ तो हुआ होगा ना तुझे. क्या कर रहा है तू? कुछ तो हुआ होगा. Screen froze. You have to start with I. Naitik. Sorry, I mean I just lost my. I mean, what was the first game? Second was questions only, and first one was like we have to go with questions only with an alphabetical order, right? Right. No, you don't have to go with the questions. It's just alphabets. So you have to start with I. And the location is unisex salon. Oh, It's the restroom. same, it's Restroom. the same thing. Continue. I can't find a wash basin, dude. Yeah. You're just kidding, nah? I think I see poop down there. कितना देर करेगा यार, जल्दी बाहर आ, बाहर लोग रुके. लात मारूंगा, दिमाग मत खा. My God, उधर फंगस भी है. नो नो नो, फंगस नहीं है, मैं देखा.
Oh, teri brrrah. And scene. I don't. It was nice, guys. You know what the thing with unisex restrooms is? I don't get the point of it. मतलब क्यों बनाए हैं तुमने? It should be like standing up washroom and sitting down washroom. Like it should be a choice. कि तुमको कैसे करना है? That should be the thing. ये male female वाला तो होना ही नहीं चाहिए. Anyways, let's move to the next group. Yeah, team 3. Priya, Prabhu, Ambarish Bhavkar, and Sultan Sheikh. Can you guys turn on your cameras and can tag team? 1 second. Okay, guys. Second me and third is Sultan. Yes. Okay. Okay, guys. A new location this time. अच्छा देना. Funeral seems nice, no? Let's do Funeral funeral. is nice, yeah. Ooh. Okay. Shall I start with A? Yeah. आत्मा दिख रही है यार मुझे इधर उधर. बाप मर गया मेरा आज. चलो फिर चलते फ्यूनरल. डर लग रहा है यार मुझे तो. यू बास आ रहा है बॉडी से. प्रेस F to pay respect. गला क्यों खराब हो रहा है मेरे यहाँ पे? ऐसा लग. Okay. अभी केमिकल डाला तो बास नहीं आ रहा बॉडी से. Is that what she said? No, I said. No, like. That was a sentence. Oh shit. Damn. Yeah, continue. You have to speak from J. Okay, yeah. जलाएंगे ना अभी बॉडी को? किल कर दिया तो जलाएंगे ही ना. The screen froze. Sultan, you have to start with questions. From A, right? No. Questions have to be random. You don't have to follow the alphabet. Okay. किसकी डेथ हो गई है? किसकी डेथ हो गई है? Sorry. अमरीश तुझे पता है? अरे वो लोग जो थे ना उनको पूछो. वो लोग कौन? तुझे तो नहीं पता? सारा को पता था ऐसा मुझे नैतिक बोला होगा. सारा कौन? बॉडी का क्या करना है पर? आज जलाना है कि कल जलाना है? पर बॉडी जलाना क्यों है? पर मरा कौन है? मुझे क्या पता. इस्लाम से पूछो. ब्रो जलाना नहीं दफन करना है. पर क्वेश्चन पूछना था ना अभी. जलाना नहीं दफन करना है क्वेश्चन मार्क. Smart people, huh? Screen froze. नहीं इस्लाम को पूछो बोला मैं. पूछो. नहीं उसको बोला मैंने. We are talking to Sultan. अच्छा. Oh sorry. मेरे को लगा. Screen froze. Continue with N. Priya. N, right? M-N. N. Sorry, No. N-L. N for? No. Okay, no, right. नहाते नहीं आए क्या यहाँ पे लोग? वो नहाते तो बाद में है ना. पर तुझे कैसे पता? क्यों पूछते हो यार ऐसे सवाल? अल्फाबेट वाला गेम चालू था ना कि क्वेश्चन होंगे. Q बोला Q. He said Q. क्या Q? ओके. क्या बोला? Q? Q पूछ रहे हैं. R. अच्छा R. राज तो बहुत है मरने के. Shut up. Shut up.
यू तो ऐसे ही मर जाते हैं लोग. Very funny. What the? एक्समस को मरा ये. Why? जालिम लोग हैं बड़े. Nancy. अंबरीश को एक्स से एक ही वर्ड आता था, एक्समस, उसने डाल दिया. You were really good. All three of you. This was the best out of the three. You all were amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so that was the end of game 1 for improv. Now we have another game. So this one is like I think this one is mainstream. It's things you shouldn't say at. So I think a lot of you might know this, but for those who don't know, we'll get a location from the audience, but this time it's open for all. We are not dividing you all in teams. Whoever has a thought can unmute and just say it. Okay? It's open to all. And for example, I'll give you an example. Things you shouldn't say at, and if the location or something is a marriage house or something, a wedding, let's say. So what I might say is, as an answer is, next time non-veg khana mangana. So like something like that. You shouldn't say it. You should say that, but you have to. So, okay. So yeah, we have a location. Could you Also, repeat that, please? Yeah, we can't understand. things you shouldn't say Brother. at is the name of the game. Okay. So you'll get a location from the audience, and you have to. This game only needs one-liners. Okay. As soon as you have a thought, you just unmute and say it. So things you shouldn't say at. I gave an example, a wedding. So like that. Do you guys understand? Yes. All right. So team tech. Give them another example. If like. All right. शादी में ये नहीं बोलना कि ऐसा बोल सकता है कि सेक्स इधर ही करना है कि घर पे. Right. हाँ, Right. like that. Right. Like अभी But funeral without topic था. अभी like that ना. Like अभी Right, but funeral topic था जैसे, तो things not to say at a funeral. If funeral was the location, तो कि मर गया तो ऐसा something. अरे ये तो जल्दी हाँ, मर गया ऐसा. Yeah. So it's अरे basically हाँ. yeah. So down to its core, it's a punchline game. But it's things you're not supposed to say. All right. So it's like I'll say reverse comedy, and we'll be giving all a situation chosen by the audience, and anybody can go. All right, out of the whole lot. Okay. Tech team, I'm sorry, but can we pin all the comedians on stage? All the comedians, can you raise your hands, please? In the Okay, so it's not team wise, right? Or is it No, team no, wise? it's open this for is all. not team wise. This is open for all. Got it. All right, we have one person left. Rachit is not here. Is Rachit here? बाल बनाता रहेगा. Rachit has left the meeting. All right, then y'all can start. The audience, can y'all give a situation? I don't think I'm pinned. Okay, wait. Soumitra? Yes, that's me. Yeah, he's not. All right, he is now. A baby's first birthday from our HOD communication. Okay, that's the tech team. Okay. All right, so guys, your topic is a baby's first birthday. Start करें. तो आप लोगों ने Anyone can go randomly. तो आप लोगों ने 9 महीने पहले सेक्स किया था. गिराना चाहिए. हाय कितनी गंदी शक्ल है. ये क्या कपड़ा पहना है इसने? इसका डैड कौन है? लड़का है या लड़की? दो How बाप long का have है been क्या? fattening this baby up for the feast? अबे ये तो एलियन जैसे दिख रहा है. This is my brother. He's a convicted pedophile. ब्रो इसको ऑफिस से पेट में डालो. केक काट सकते हैं. अबे पर ये तो तेरे भाई जैसा दिखता है ना. अबे तो बाजू वाले का लड़का जैसा लग रहा है. के डायपर स्निफ कर सकता हूँ प्लीज.
हग दिया चड्डी में शी। इसकी बम पे मार सकता हूँ मैं। ये पैदा तो क्यों हुआ है? literally काम करती है। कैच कैच खेल गया बच्चे के साथ। कितना छोटा है। ये प्लान तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। Could I have some Please, for extra क्या? diapers, please? अबे उसका आँख है कि गोटी है? जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। लगता है ये कभी क्रेडल से उठेगा ही नहीं। अरे पहला बर्थडे आज तक बोला नहीं, मुका है शायद। Yum yum. And scene. Can we have another location or something? A shelter home seems nice. Let's do shelter home. What? Sorry? Sorry? What? Pardon? Sorry? A shelter home. नहीं, Like a place for people who don't have a home and Yeah, that yeah, sort of thing. orphanage, Yeah. orphanage, something like. ये बुढ़े For अभी तक elderly, for kids. क्या क्या? Not an orphanage, a place where people who don't have home basically they can go. मतलब हाँ समझा। any age does ऐसे तो लोग जरूरी घर क्यों नहीं नहीं खरीद है लेते? देखो पता है मेरा 2 BHK। मेरा 3 BHK है। मुंबई में कितने घर महंगे हैं ना? यार घर क्यों खरीदना, फुटपाथ पे सो जाओ ना। मैं तो मेरे पास है अलग रूम सेक्स करने के लिए सिर्फ। मैं तेरे पास फुटपाथ में नहीं सोऊंगा, सलमान आ जाएगा। चलो गाइस मैं घर जा रहा हूँ। मेरी देखो मम्मी रुका, बुला रही है, मुझे घर जल्दी जाना है। मेरे बाप के 4 घर है, 2 मेरे नाम पे। चलो मैं पनवेल वाले घर जा रहा हूँ। और तेरा बाप मैं हूँ। पर ये इसने शेल्टर रूम किसने रखा है इसका नाम? क्या पता, कोई पागल ही होगा। शेल्टर भी नहीं है क्या, घर भी नहीं। छी। Waterproofing किया है क्या? ब्रो तो रेंट कितना भरते तुम लोग? रेंट कितना है घर का? खाना मिलता है क्या वहाँ पे? इस घर से भी अगर निकाल दिया तो? डेजर्ट मिलता है क्या कितना खाने के तुम्हारा? बाद? हम किसी घर में रहने लायक हैं अभी? आज मेन्यू में क्या है मामा? And scene. शादी है, तुम लोग को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो अंबुजा से मिलने लगाया क्या कभी? और खेलना है तुम लोग को या चेंज कर? लोकेशन चेंज, लोकेशन चेंज। हाँ, लोकेशन चेंज है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा Next location is Your ex's vaccinations. wedding. Okay, no. है। कौन सा? नहीं, go on. Your ex's wedding. Okay. सुअर जैसा मुंह है इसका। वो वर्जिन नहीं है। उसके मैं बहन से शादी करता हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ। इसका पति घोड़े जैसा दिख रहा है मेरे को। अरे ये तो वही नेकलेस है ना जो मैंने लिया था। चलो फटाफट खाना सारा खाना निपटा देते हैं यहाँ पे। अरे इसका पति गे डीजे है। प्ले सच अ फकिंग अबे होर। पति का बाप तो गधा दिख रहा है मेरे को। What can I do to ruin this wedding? I mean, I don't want दहेज to में marry. सिलेंडर दिया क्या? Bro, she likes 6 inches and not from Subway. थी बे दहेज में मौजूदा जैसी स्कॉर्पियो दिख भी रही है। मिला। माँ इसको भगा ले क्या? भागने तो इतना अपने नकली बच्चे की सोना शादी पहना है। वाली है। अरे लड़की की माँ क्या सेक्सी दिख रही है। और उसका बाप गधा दिख रहा है। कबीर, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की नहीं तो उसकी माँ ही सही। ये बेटे Bridesmaids को कहाँ कितना अ, थाली I कितने का है? didn't sign a एक prenup. थाली You कितने का gotta है? sign a prenup, my friend. I regret dating him. You will regret marrying her. डेजर्ट में And चॉकलेट आइसक्रीम नहीं रखा है। I still and love scene you. and scene. खाना बेकार है उनका, मैं बता रही अरे हूँ। भाई अगर रुक पानी जा। एकदम गंदा है। काफी है। Thank you guys. Thank you. It was a good topic. I still want to say that. And Yeah, you yeah. guys were also good. और एक So, सीन है। हाँ, कोर्ट रूम। जज साहब बाहर मिल मार दूंगा। तारीख पे ऑर्डर तारीख पे ये तारीख। कॉमिक का में सुना सा लग रहा है। ऑर्डर क्या कर रहा है? मैकडी में से मेरे को बर्गर चाहिए एक। क्या बोला? At least ऑर्डर एक यहाँ चीज पे बर्गर। date दे दो। Date तुझे पे खुद चलो। याद है लॉस तुझे खुद याद है? Your Honor, you cannot give him क्यों? 69 फालतू years चीज for लिख रहा sexual है। assault. जज 50,000 चल जाएगा क्या कि और बढ़ाओ? ये जज को मालूम भी है क्या जज section को हमेशा 375 स्टैंडिंग क्या है? ओवेशन क्यों चाहिए? यार इन दीवारों को कोई रंगता क्यों नहीं है? पहली बात तो डिप्रेसिंग सा दीवारों look। छोड़ो, उनके कपड़े को रंगो। ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं। बॉम। ठीक है चलो awkward हो गया जेल and जाने के लिए scene. क्या करना पड़ेगा? जेल नहीं जाने के नहीं लिए हो गया।
Okay, thank you everyone. That was our second improv round. You guys did Thank you very so well. much. Compared to the first everyone. one, ये बहुत अच्छा था. मजा आया और एक रहता तो और मजा आता. It was fun, yeah. हाँ और मजा आता. Only अपन जाओ यार. It was great, yeah. It was very fun. This round was super fun. And I have done the scoring. So Oh, Ma'am, we won't be announcing winners today. The yeah, winners will be Acha, announced at the okay. closing ceremony tomorrow we'll keep evening. them in the Okay, dark for a okay. suspense. I'll be getting DMs, especially that guy, curly head one. बता दो कौन जीता. मैम आप थोड़ा और ज्यादा बोलते ना, अभी तक विनर अनाउंस हो चुका होता बस. Things not to say in an event. मैम 50,000 चल जाएगा अभी बता दो. यार मेरे को 50 रुपए भी नहीं दिया इन्होंने. तुम मुझे पेटीएम करो, मैं सही में बता दूंगी. मैं 100 रुपीज जीपे करूंगा. मेरे को बता दो कौन विनर है. हो गया. Things not to say. गेम हो गया है boys. बस. Great. So thank you so much for this event. Thank you everybody for joining in. Is there anything else left or is it done? No, we'll have a like concluding. कुछ तो बोलूंगा मैंने लिखा है. Wait, मैं लिख के आया हूँ. बहुत मुश्किल से hosting मिली है. Please too much, you know. Okay, cool. You carry on. Thank you so much for having me. That was my job, I guess. So yeah, best of luck to you all. And तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी कि कौन जीता है. Please मुझे DM में गालियाँ मत देना. It was a very close call. आज रात को नींद नहीं आएगी. It was a very close call. So especially the first round, उसमें सबके ही बेकार है. मतलब I want to say that. So all of you were terrible in that, but the second round was very good. Best So, advice. so yeah. Thank you so much. I'll my mouth now before Karthik throws me out of the meeting. It's okay. Yeah, you can continue. Thank you for having me. And that brings us to the end of our event. Thank you to all the participants, our audience, and of course, our judge for being part of Cometty. And that's it, guys. On that very funny note, we would like to end day one of TiltShift 2022. Thank you so much for joining us. Before we conclude, here's a final. वो कौन था? ये क्या था? ठीक है, I'll skip that. Before we conclude, here's a word from our sponsors. Our title sponsors are Color Bucket and Resume, our co-sponsor Art Venue, digital media partner Atpat News, eyewear partner MacWeed, beauty partner Blur India, and merchandise partner Tees. So yeah, hope to see you all tomorrow with the same energy we saw today. I have been your host Karthik, officially signing out. Thank you.